अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उस्मा तारिक ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस आर्किटेक्चर के 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर की बात करेंगे। 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर जो है ये डेटाबेस मॉडलिंग के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है और इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटाबेस में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। And it provides a conceptual framework for understanding the organization of data into a logical structures. And this architecture consists of 3 levels of schema: the external schema, the conceptual schema and the internal schema। तो यहाँ पर हम इन तमाम को डिटेल में देखेंगे, इन तमाम लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल स्कीमा क्या है। The external schema is the highest level of the schema architecture and it represents the way that end users perceive the data. External schema actually end users को deal करता है and it describes the user's view of the data and consists of a subset of a conceptual schema. External schema is specific to each individual user or group of users and it defines a portion of the database that is relevant to the user's needs. For example, a sales department might have an external schema that focuses only on customer information and order processing, while the accounting department may have a different external schema that includes financial information. जब हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ द मिडल लेवल ऑफ द स्कीमा आर्किटेक्चर एंड इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डेटाबेस इन टर्म ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन इट्स एंटिटीज़ एंड ऑल यू नो दैट व्हाट डज इट मीन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेशंस क्रिएट करेंगे बिटवीन द डेटा और यहाँ पर समझ लें कि हम एक मॉडलिंग कर रहे होते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर अपने डेटा को कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा। एंड इट प्रोवाइड्स अ global view of the entire database and defines the logical structure of the data without specifying how the data is stored physically. The conceptual schema is also known as the data model or the logical schema. It defines the tables, the relationships, constraints, and other database objects. The conceptual schema is independent of any particular database management system. And it provides a high level view of the data that can be easily understood by end users and developers alike. उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्कीमा की। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्कीमा की। द इंटरनल स्कीमा इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द स्कीमा आर्किटेक्चर एंड इट रिप्रेजेंट्स द वे दैट द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। And the internal schema describes how the data is stored and the database management system's storage structures such as tables, indexes, and views. The internal schema is also known as the physical schema कि physically data किस तरीके से store हो रहा है आपके database के अंदर and it is specific to the particular database management system being used. Internal schema is used by the database management system to optimize the performance of the database by organizing the data in a way that makes it efficient to retrieve and manipulate. In short, we can summarize this topic as the 3-level schema architecture provides a hierarchical structure for organizing data in a database management system. The external schema defines the user's view of the data, the conceptual schema defines the logical structure of the data, and the internal schema defines how the data is physically stored on the computer system. This architecture provides a flexible and efficient way to manage large amount of data and allows for easy modification and customization to meet the needs of different users and application. I hope कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। काइंडली शेयर माय वीडियो एंड इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल स्टिल काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन and like my video. Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz.